Hello everyone, welcome to Life Simplified live session and welcome to our series on abundance. And today we will be talking about the attitude or the energy of suspicion और कैसे ये abundance या prosperity से connected है. Now suspicion means क्या? Suspicion का ये meaning है जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा अंदर में यही सोचते हैं कि सामने जो बैठा है वो कुछ चोरी ही करने के लिए आया है या मेरे से कुछ छीनने के लिए आया है. There is always a feeling or an energy of doubt within. Always there is a doubt that somebody is trying to take something from me. So I've often seen people, if they are successful in life, even if they are successful, they are always suspicious कि ओ ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, वो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको मेरे से कुछ चाहिए, शायद उसको मेरे से पैसा चाहिए, शायद उसको मेरे से ये चाहिए. सो हमेशा क्या लगता है अपने ही दिमाग में एक ऐसा फीलिंग आ जाती है, एक ऐसी फीलिंग सेट हो जाती है और देयर इज अ प्रेजुडिस which stays in the mind that anybody who is being nice to you or anybody who is also being kind to you, there is always a suspicion that this person is trying to steal something from me. This person is having some hidden agendas or hidden motives. So this energy of suspicion actually comes from a deep-seated lack feeling. Very deep-seated lack feeling. Have you seen people like that? क्या आपने आसपास में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा हर इंसान को एक शक की नजर से देखते हैं? Unless it is their profession like Sherlock Holmes, but कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने कोवर्कर्स को भी, अपने आसपास के जो लोग हैं, हर इंसान को हमेशा उनको ऐसे ही लगता है कि दिस पर्सन इज हैविंग सम हिडन एजेंडा. उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उसको मेरे से चाहिए. And there is no peace inside. There is always a feeling of suspicion. Now, इससे एक underlying lack कैसे connected है? And if we are suffering from this, how can we overcome this within us? Now, you should often reflect and see if somebody is being nice to you or somebody is being kind to you. अगर आपके दिमाग में हर समय यही विचार आता है, oh, this person is very kind to me. Maybe this person wants something from me. So क्या होता है कि there is always a subconscious thought or a subconscious feeling that कोई मेरे से कुछ ले रहा है और जो वो लेना चाह रहा है उसे मुझे प्रोटेक्ट करना है. इससे क्या होता है कि हम लोग खुद एक डर में जीने लगते हैं. There is always a constant fear that stays in the system. So the underlying lack is actually coming बिकॉज हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या किसी ने आपको कुछ चीट किया या हो सकता है किसी ने कुछ झूठ बोल करके आपके साथ कुछ चोरी की. एक बार किया या दो बार किया, बट इफ दिस थॉट फॉर्म और इफ दिस एनर्जी is fixed in your head and if you make it as a prejudiced thought, then even if there are nice people, positive people wanting to connect to you or wanting to help you, हमेशा आपके back of the mind आपको यही feeling आएगी कि वो why is this person coming to me? Maybe इसको मेरे से कुछ चाहिए, maybe इसको मेरे से कुछ, there is some hidden agenda, there is some underlying motive. So in our minds, remember that we cannot keep doubting people's motives all the time. And if that is happening, it is lack feeling. Abundant feeling कैसी होती है? Abundant feeling में क्या होता है कि अगर if somebody is trying to help you, somebody is trying to connect to you, somebody is trying to be around, you give them a chance. You try to understand and you don't always look with an eye of suspicion that something is wrong. People can't be nice. Now the underlying lack feeling, why is it? It is simply because somewhere you yourself internally only have always been scared of helping people freely. तो जब सस्पिशन होता है तो अगर आपको भी किसी को हेल्प करनी है या किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, you will only be able to do it only if there is a need. या सामने वाले को बहुत ज़्यादा जब आपको ज़रूरत है तभी अगर आप हेल्प करते हैं, वही लैक मेंटालिटी आपके अंदर है और उसी की वजह से दूसरों को भी हम लोग उसी शक की नज़र से देखते हैं कि उसका कुछ मतलब है इसीलिए वो हेल्प कर रहा है. बट दिस एक्चुअली लॉक्स मेनी हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस. दिस लॉक्स मेनी मतलब इसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है. तो ये जो सस्पिशन की एनर्जी होती है
ये लैक फीलिंग, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि पीपल विल नॉट वांट टू वर्क विथ यू, पीपल विल फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल टू हैव अ वर्किंग रिलेशन विथ यू। व्हाई? बिकॉज आप जब उसके साथ काम करते हैं तो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे डाउट कर रहा है। Have you seen or experienced this with certain people where they always doubt, they always doubt you, और उसमें क्या होता है कि हमको उनके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। So when we have suspicion within us, people will not want to work with us, and very few people will want to work with us. And why this suspicion comes? This maybe it comes because of one or two negative experiences that we may have had in our lives. But not everybody is like that. So ये बस एक मेंटल ब्लॉक है कि एक बार किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव कर दिया या किसी और ने नेगेटिव किया, उस मेमोरी को इतना ज़्यादा आपने अपने अंदर फिट कर लिया है या फिक्स कर लिया है that you start seeing everybody else in the same light or in the same eye. So it is very important that we let go of this energy of suspicion and always be ready to give others a chance. And that is how even the great ones work. अगर कोई कुछ गलती भी करता है तो अगर कुछ गलती किया भी है और वही इंसान कुछ और कर भी रहा है, you can't keep looking at them with suspicious eyes. When you keep looking at them with suspicious eyes, people will run away, and this will bring in lot of lack in our lives. If it is in relationship, जैसे relationships में होता है, relationships में अक्सर आप देखेंगे, suppose there is a couple. Now if the wife is very suspicious by nature, अगर उसका नेचर, उसका थॉट्स बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, तो उसका हस्बैंड अगर लेट भी आ रहा है तो वो यही सोचेगा, अरे वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं घूम रहा है, वो किसी और के साथ तो ये नहीं कर रहा है, वो ये तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, वो हस्बैंड के मन में एकदम डर बैठ जाएगा और धीरे धीरे रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। So this is what happens even in relationships. If you're doing this with your child, अगर आप बच्चे को हर समय एक suspicious आंखों से देख रहे हैं, हमेशा उसको चेक कर रहे हैं, हमेशा उसको डाउट कर रहे हैं और ये एनर्जी अंदर में रख रहे हैं, एक होता है कि you care for your child, another one is you're constantly being suspicious about the habits of your child. सस्पिशन में क्या होता है कि इंसान 2-3 डॉट्स और आगे कनेक्ट कर लेता है और यही सोचता है कि ये इंसान ने कुछ गलत किया है और वो गलती ढूंढने में लग जाता है। It makes your mind very excessive in finding faults. So how about transmuting this energy from finding faults to finding strengths? So this happens in relationships. If you're constantly trying to find, oh, this person behaved like this, मतलब उसने ऐसा कुछ किया होगा या वैसा कुछ किया होगा, and the mind is just connecting dots and thinking of all the negative things that could have happened. Many times people do it in business. अगर आपका कोई एम्प्लॉई है and that employee is a very loyal employee, और अगर उसको भी आप एक सस्पिशियस नज़र से हर समय देखेंगे तो कभी भी आपके लॉयल एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेंगे। सो इफ़ यू वांट लॉयल पीपल टू स्टे, यू हैव, आपकी आंखों को एक परख होनी चाहिए कि किस पे हम विश्वास कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते हैं। So if you have loyal employees, like even in the case of the husband and wife which I was talking about, so if the wife is constantly suspicious कि मेरा husband का कुछ extramarital affair चल रहा है, and if the husband is extremely loyal, what will happen? The husband will choose to stay away because it feels like a slap on the face कि मेरी इतनी लॉयल्टी के बावजूद भी अगर मेरी वाइफ ये मेरे बारे में सोचती है या ये नज़रिया रखती है मेरे लिए, so that husband will lose respect for the wife and might actually want to leave the relationship. सेम थिंग हैपन्स इन बिजनेसेस। अगर आपका एम्प्लॉय बहुत लॉयल है और उस लॉयल एम्प्लॉय को अगर आप एक सस्पिशियस आंखों से देखते हैं और हर समय उसको चेक करते हैं, डाउट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द लॉयल्टी ऑफ दैट पर्सन, it is quite possible that you will lose out on that loyal employee. Same thing with your friends, same thing with your co-workers, or if you are in an organization working together with certain people. So अपने जो loyal लोग होते हैं उनको लॉन्ग टर्म पकड़ के चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज दिस एनर्जी और दिस एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन विच एक्चुअली विल टेक अस अवे फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड पीपल. So it is very important that to stay tuned with people who are loyal and never break their loyalty by being suspicious to their energies, to their loyalties. क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं जो दिल से काम करते हैं, जैसे आपका कोई एम्प्लॉई है और वो एम्प्लॉय बहुत दिल से काम कर रहा है
और आप ये सोच रहे हैं अच्छा वो दिल से इससे काम कर रहा है क्योंकि इसको कुछ प्रमोशन चाहिए या उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, हो सकता है कि वो उसके लिए काम वैसा नहीं कर रहा है। बट इफ यू आर हैविंग द एनर्जी ऑफ सस्पिशन, तो उसकी जो ये दिल से काम करने की इच्छा है वो अपने आप कम हो जाएगी। और जो ये लॉयल लोग हैं वो आपके ऑफिस से बाहर निकलने लगेंगे। सो नेवर रिवॉर्ड loyal people with suspicious eyes, because if you do that you will not have abundance of loyalty. So loyalty and suspicion actually goes very much hand in hand, and that is why I wanted to take this topic today. Just wanted to discuss कि अगर आप किसी को उस बास्केट में डालते हैं कि yes this person has proved enough to be loyal, yes you can monitor the work but do it politely, you can check the work but do it politely, but don't cross the line where you start making thoughts that this person is capable of cheating. क्योंकि जो लोग लॉयल होते हैं उनको अगर ये थॉट आपसे सेंस हो जाए कि ये तो मेरे को चीट समझ रहा है, मेरी लॉयल्टी के लिए मेरे लिए ऐसा कर रहा है, तब वो आपके लाइफ से इतना डिसरिस्पेक्टेड फील करेगा और धीरे धीरे आपके लाइफ से जाने लगेगा. एंड देयर इज नो प्राइस बाय द वे दैट वी कैन पे टू पीपल हु आर एक्सट्रीमली लॉयल इन सर्टेन रिलेशनशिप्स. So we have to be careful. Now the question is, how do we judge? How do we just judge by past records? And the energy makes the whole difference. There is a difference between monitoring versus being suspicious. एक होता है कि आप काम चेक कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज डिफरेंट. और दूसरा होता है कि आप ये मन में विचार बना के काम चेक कर रहे हैं कि इसने कुछ गलत काम किया है और उस गलत काम की खोज में आप लग गए हैं, उसे बोलते हैं सस्पिशन. So how to check? Very simple. If you were monitoring someone and then you found a lot of faults in that person, then you talk straight. But बिना कुछ proof मिले अगर आप किसी के ऊपर डाउट करते हैं, then it really goes against us. And this will not help us having abundance of trusted, loyal people around us. So this is the way that you can judge. I repeat, there is a difference. एक अलग मीनिंग होता है चेक करने का या मॉनिटर करने का वर्सेस किसी की गलती ढूंढने का. जब आप किसी की गलती ढूंढने में लग जाते हैं, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग थॉट बना दिए कि ये इंसान तो चोर है और हम इसकी चोरी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सामने वाले को खराब फील होता है. Like I gave you an example of the husband and wife. So wife has already made a thought that my husband is cheating on me. और उस थॉट के साथ वो चेक करने के लिए जा रही है, तो वो थॉट आपके दूसरे रिलेशनशिप को, वो हस्बैंड को जब सेंस होगा, देन द हस्बैंड फील्स डिसरिस्पेक्टेड. वो यही सोचेगा अरे मेरी लॉयल्टी के लिए इतना लॉयल्टी दिखाने के बाद भी अगर मेरी वाइफ मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग सो लॉयल? But there is a difference between being caring and being just observant about things. So you can be observant, you can just have a look at what is happening, but don't cross the line where you internally make a thought that this person is wrong and you are all on a rage to find a fault. ऐसा आदमी कब करता है? जब उसको अंदर से पता होता है कि ये सामने वाला चोर है और उस चोरी को पकड़ने के लिए लग जाता है. And that is why there is a difference between the word monitoring versus being suspicious. So if you want to be surrounded by loyal people, and if you want to be surrounded, then you need to by people who are always there to support. And if you want loyalty around you, then it is very, very important that you handle the energy of suspicion properly. I repeat, be careful about the thin line between monitoring versus being suspicious. शक्ति नज़र से देखना वर्सेस मॉनिटरिंग की नज़र से देखना, दोनों नज़र में डिफरेंस है. जिन लोगों ने प्राणिक हीलिंग किया है, दोनों चक्रस में भी डिफरेंस है. सस्पिशियस नज़र से देखने में आप एक अलग चक्र इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटरिंग की नज़र के लिए आप एक अलग चक्र इस्तेमाल करते हैं. आप अगर जेन्युइनली मॉनिटर करेंगे तो सामने वाला इंसान ऑफेंडेड फील नहीं करेगा, बट आप एक शक की नज़र से जब मॉनिटर करेंगे तो सामने वाला इंसान आपके लिए उसकी जो रिस्पेक्ट है उसकी ज़रूर से कम होगी और वो उसको सेंस हो जाएगा. Alright, so today in our healing, let us practice letting go of the energy of suspicion within us so that we don't miss out on the opportunity of having loyal, trusted people around us. Okay, let's have an energy to not cross the line of monitoring versus suspicion.
and not always making the thoughts कि सामने वाला चोर ही है और मेरे से कुछ छीनने के लिए आया है. This is lack mentality. कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता unless and until you have the karma for it. So have faith. You don't need to monitor the whole world actually. You need to monitor your own karmas. Have faith that if you have done what is right, the world is there, the universe is there, and God is there. बट हर समय आप यही सोचेंगे कि मेरे आसपास में सब चोर ही बैठे हैं, यू विल ऑफन फाइंड आउट ऑफ एल्डरली पीपल दे हैव दिस थॉट, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ चोरी एक्सपीरियंस की है, तो उनको क्या लगता है कि मेरे आसपास में हर इंसान चोर ही है, हर बिजनेसमैन चोर है, हर इंसान गलत ही है, और उसी चीज़ को ढूंढने में लग जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट थॉट यू एंड अप समटाइम्स अट्रैक्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ पीपल. So let's drop these grudges within us. Let's drop these suspicious thoughts within us, and let's give a chance and see people with the right eye. Okay? So let's close our eyes. Be aware of your heart. Be aware of your crown. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Shra Koksui, to the healing angels, healing ministers, to all the great, great ones. I humbly let go of all the negative energies, negative emotions, negative attitudes of suspiciousness, of always trying to doubt the motives of other people. May all these assumptions, these suspicions, and this energy of doubting others' motives, may this get disintegrated from my aura, from my chakras, from my system. I let go of all these energies within me. I let go, I let go, I let go. I am the soul. I am full of peace. I am the soul. I am at peace, and I realize that nobody can cause me harm unless I have the karma for it. I am the soul, and I have faith in God. Thank you, God, for blessing me with the ability to discern. Thank you for blessing me with the ability to respect other people and to not cross the line. Thank you for blessing me with the ability to treat trusted people in the right way. So be it. Gently open your eyes. Okay, so thank you very much for joining in. I hope this session was helpful. This is a little different topic, and in fact we've been talking about it for the first time. So try to go deeper into it. Please do share your comments on what do you think about this energy. When somebody gives us this energy, how does it feel? And are we becoming aware of where are we giving that energy to others? Because when we give it to others, the same karma comes back to us. So let us contemplate on this type of energy also, this energy of suspicion. Is it really positive or is it negative? Think about it. Thank you very much for joining in.